ठाकुर विद्या मंदिर कॉलेज ने 6 नवंबर 2023 को डॉक्टर सीवी रामन के जन्मदिन के अवसर पर एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। समाज और देश के लिए समर्पित रहने वाले बच्चे विज्ञान की अद्भुत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हर फील्ड में ऊर्जावान है। खास करके शिक्षा और विज्ञान की बात करें तो समय समय पर यहाँ से ऐसे ऐसे शिक्षक वैज्ञानिकों के नाम आते जो समाज और देश के प्रति समर्पित रहते हैं। ऐसा ही एक विद्यालय मुंबई के उत्तर मुंबई कांदिवली ईस्ट में है, जो हमेशा उनकी संस्थान और शिक्षक सहित बच्चे सुर्खियों में रहते हैं। ठाकुर विद्या मंदिर कॉलेज ने 6 नवंबर 2023 को डॉक्टर सीवी रामन के जन्मदिन के अवसर पर एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान में रुचि और ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करना था। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन, जीवन शैली और गणनात्मक विचार। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से छात्रों ने नई वैज्ञानिक गणना और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाई। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन छात्रों में वैज्ञानिक भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूक किया। यहाँ पर छात्रों को विज्ञान के चमकते तारे के रूप में देखने का मौका मिला और उन्हें विज्ञान के अद्वितीय दुनिया में खोजने का प्रोत्साहित किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को विज्ञान में रुचि बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला, जिससे बच्चों में काफी उत्साह और उमंग भी दिखा। आपको बता दें कि इस विद्यालय के शिक्षक बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वह अपने आप में काफी अद्भुत और सराहनीय है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को सहयोग और मदद की भावना से कंधा मिलाकर चलते हैं। यही वजह है कि प्रदर्शनी में बहुत सारे बिंदु और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना साफ तौर पर छलक रही थी। मुंबई से पुलिस महानगर के लिए हितेश चौधरी की खास रिपोर्ट। I congratulate this Thakur Vidya Mandir School for organizing this techno science exhibition. The main aim behind this is to create interest among the students and to develop the scientific temperament. Okay, we all know that Dr. Abdul Kalam always says you should have a big dream. Having a small dream is like having crime. So you should have big dreams and big aim in life. And secondly, what arouses you to create the interest, right? See, this need or necessity is the base of all these discoveries. Okay, so one has to be very enthusiastic. Enthusiastic means you should know from what is the source of that thing, so you should keep on asking questions. As we all know, tomorrow is the birth anniversary of Dr. C.V. Raman, Indian great scientist. Okay, the best quoting of his is, he says that if you think right, if you ask right, you will get the light, and if you think wrong, you will be gone. So you have to ask the appropriate questions, specific questions. See, we all are here, science students. We need not write pages after pages like ask students to fetch the marks. You have to be very, very specific. One who asks these questions will definitely get those answers. And today we were like speechless because there were various from all field projects were there, like from agricultural field. Okay, now India is basically an agricultural land. Okay, and we are having that limited area, but the population is increases like anything. We have surpassed the China also. So the projects like hydroponics, that was an alternative source for agricultural land. So with the help of water and drip irrigation, sprinkle irrigation, they're very nice. Biogas plantation, which was very eco-friendly to reduce the pollution. Then now there's a crisis of electricity uses. Okay, so the project on windmill, that was an option for this electricity, okay, charges. So that was again innovative. Now we are moving to this artificial intelligence, and the coding projects was also very upcoming, and we like that. Okay. So there is various varieties, various application of various laws and how your mind develops. So it seems you have taken a lot of efforts to develop that, and it is not a matter of one day. They must have taken so many days, trial and error, what is the working condition, how it works out, what to be written, what not to be written and all. So I congratulate all the students. In our view, all the students are winner, but still, since it is a competition, they have categorized few. Thanks on behalf of all of 4 judges. I take this opportunity to thank you all by inviting us as a judges. Thank you so much and wish you all the very best. Hello everyone, I am Raj Dalal and I am here to share my review about the TVM Science Exhibition.
So overall, the experience was amazing. The projects that that my colleagues created were jaw-dropping. I was amazed to see that such things exist. I was amazed to see the Tesla coil, the industrial production of CH4 gas, along with the hydroelectric power plant model that one of my friends had created. Overall, the experience was good, and I thank the TVM college for organizing such an exhibition. Thank you.